Goki app on your favorite show, the Hina Bhimani Wellness Show. Today we will be discussing about how to avoid weight gain in a quarantine. क्वारंटाइन की वजह से वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम कैसे इस क्वारंटाइन में अपना वेट गेन होने से बचे. A very interesting session, guys, so stay tuned, keep watching Goki, and if you have any questions for me, please feel free to ask me. Today's session is really amazing because हम सबको टेंशन हो रही है, हम घर पर बैठे हैं, मूवमेंट नहीं है, वेट गेन हो सकता है, पेट बाहर आ जाएगा, you know, we all are stressed about that. So I'm going to be giving you some handy tips which will help you to understand how you can keep your weight in check while you are sitting at home. Gaurav ji, good afternoon, namaste, Jai Singh, pranam, namaskar, thank you so much for tuning in. आए हम मिलकर बनाए आज को सुखद शुक्रवार. एब्सोल्युटली आज का शुक्रवार सबके लिए शुभ बनाए. मनोरंजन कुमार सिन्हा जी, हाय, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सो गाइस, बहुत ही अमेजिंग चैलेंज चल रहा है गोकी पर, जहां पर आप कोई भी वर्कआउट जो है जिसमें होम क्वारंटाइन मेंशन किया हुआ है, आप वो वर्कआउट देख सकते हैं, या कोई भी लाइफ कोच को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उससे मिलेगा आपको 1 पॉइंट. पूरे 30 पॉइंट जमा करने पर आप टॉप 5 गोकी प्लेयर्स को मिलेंगे गोकी मर्चेंडाइज एंड टॉप 100 को मिलेंगे 3000 गोकी कैश पॉइंट. इज़न्ट दैट अमेजिंग? सो अपना वर्कआउट शुरू कर दीजिए गोकी क्वारंटाइन होम वर्कआउट के साथ, या हम में से कोई भी गोकी प्लेयर गोकी कोच को ज्वाइन करके उनका सेशन जो है ज्वाइन करे. सफेदी की सफेद, white is pure and clean, great going, thank you so much Jay. Like I said, I love whites and that really resonates with me. I can really feel I enjoy wearing that color. Shelly Kapoor, good afternoon Malikarjun. Today I did 40 minutes of core workout, also sent you a picture of weighted planks. Yes. So गौरव ने मुझे गोकी अरीना पर बहुत ही प्यारे पिक्चर्स भेजे हैं जिसमें उन्होंने वर्कआउट किया है, अपने बेटे के साथ प्लैंक्स किया है, जहां पर उनके बेटे पीछे बैठे हुए हैं, विच इज सो कूल. सो आई शेयर माई वर्कआउट विथ यू ऑल. आई डिड 50 सूर्य नमस्कार एंड आई डिड प्लैंक्स फॉर 5 minutes एंड देन आई डिड crunches, I did leg raises. It was amazing. I had so much fun. I'm doing great. My throat is much better, Jay. Hope you are doing good too. Timanna, good afternoon. Sukumar Pandit, good afternoon. Santosh Mishra ji, good afternoon. So guys, गोकी चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्वारंटाइन होम वर्कआउट चैलेंज पॉइंट्स जीतिए, और गोकी कैश भी जो है आप जीत सकते हैं, और गोकी मर्चेंडाइज भी आप जीत सकते हैं. गुना इज योर, नमस्ते गुना, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सो गाइज, जैसे मेरा सेशन है वैसे हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं. वी हैव परवेज डूइंग मैराथन ट्रेनिंग, we have Kechil talking about nutrition, we have Arushi doing healthy recipes, we also have Tufel Azhar doing fitness, Alista teaching dance, Shweta Suparna doing Zumba, we have Ronak, Nishta, Bhumika, all of them doing yoga sessions. So guys, उनको जाकर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और उनके योगा सेशंस अटेंड कीजिए. घर पर बैठे हैं, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. अगर हमने अब तक वर्कआउट शुरू नहीं किया है, सो दिस इज द टाइम. इतना समय हमको फिर से नहीं मिलेगा, तो इस समय का उपयोग कीजिए और वर्कआउट योगा सीख लीजिए ताकि आप अपने आप से वर्कआउट कर सके. Santosh is saying, ma'am, here in Goa, due to people's pressure, Goa CM has made to open all grocery stores and supermarkets. Santosh, see, the thing is, it's okay to you will have to keep eating food, which is important. खाना तो खाना ही है, तो ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स और फार्मेसी अगर खुली है तो इट्स अ गुड थिंग. द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट ये जो सुपरमार्केट्स है इसमें लोग बहुत गर्दी करते हैं, पीपल लाइक क्राउड, जिसकी वजह से देयर इज नो पॉइंट इन कॉलिंग डूइंग अ कर्फ्यू. एक की वजह से पूरे ग्रुप में ये फैल सकता है. सो मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस, ओके, इफ यू मेंटेन सेफ डिस्टेंस देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड सभी लोग सेफ रहेंगे. सो मेंटेन सेफ डिस्टेंस, कवर योर नोज, सैनिटाइज योर हैंड, सैनिटाइज द थिंग्स दैट यू गेट होम, and keep washing. Please follow the WHO guidelines basically, and then you can go out. Drank Giloy juice in morning, that's great, that's really good.
All lines up here, lockdown is not followed completely. That's very sad, Santosh. Over here, everybody in Mumbai, जहाँ पर भी लोग follow नहीं कर रहे, वहाँ पर उनको डंडे पड़ रहे हैं. So people are actually scared to step out, you know. गिलोय जूस पिया है. That's so good, guys. गिलोय is really, really very good for boosting your immunity. तो गिलोय भी जो है आप include कर सकते हैं अपने diet में regularly. Dada is here. Hi, Dada. Good afternoon. Thank you so much for tuning in. So, guys, how to avoid weight gain in a quarantine? Now see, weight gain avoid करने के लिए सबसे पहले तो जो है हमको हमारा खाने का जो साइज है, जो पोर्शन साइज है, वो कंट्रोल में करना है. नॉर्मली हम 3-4 रोटी अगर खाते हैं, सो यू हैव टू ट्राई एंड यू नो कट इट डाउन टू से अबाउट 1 or 2 chapatis. Please, you know, do not overfeed yourself since you're sitting at home, sitting in front of the TV, doing doing very little bit of movement. You have to cut down your portion size because you are not stepping out. So there is a difference between difference in the diet of people who have a sedentary lifestyle and who have an active lifestyle. Now most of us have an active lifestyle, but because of this quarantine, हमारी lifestyle बिल्कुल sedentary हो गई है. So try and cut down your portion size. Stay hydrated. That is one problem. घर पर है, प्यास नहीं लगती, पानी हम कम पीते हैं. Please stay hydrated. 3 liters of water. Lot of times our body gets fake hunger pangs. हमको actual भूख नहीं लगती, fake hunger pangs होते हैं, जिसकी वजह से हम नॉर्मल से ज्यादा खाना खा लेते हैं, which is very bad for our health, right? तो उस वजह से whenever you feel hungry, you should actually just have first 1 tall glass of water and then you have to wait for 5 minutes to see आपको actually भूख लगी थी या प्यास लगी थी. Drop in just 1% hydration level. Okay, 1% भी अगर hydration शरीर में कम होता है तो it can cause lot of health issues. It can cause weight gain. It can cause acidity. It can cause lot of disturbance in your body. So keep hydrating your body. Take it seriously. Keep 3 bottles of water, glass bottles and steel bottles. No using any plastic bottles. Okay, please be careful. No using any plastic. Plastic secretes a lot of chemicals. तो plastic bottle जो है हमको बिल्कुल भी use नहीं करनी है. प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है. ग्लास बॉटल और स्टील बॉटल हम यूज करें. कैसे भी करके पानी हम 3 लीटर फिनिश करें. वेरी इंपॉर्टेंट. There are kids around the house, lift them up to lose weight. Yes, that is one very good thing. Amit is here. Namaste, Amit. Thank you for tuning in. Bharat Bhushan missing launch. What are you missing? Which launch are you missing? Today I prepared jaggery elaichi poha for breakfast. I'm preparing lady finger sambar and potato broccoli curry. Wow, Dada, you are an expert. यार आप इतना अच्छा खाना बनाते हो कि खाने के टाइम पे आप ऐसी बातें करते हो. I can't talk. My mouth starts watering. Asif Hussain, hello. Walking within home. That's very good. That's really, really good. So put on some good music. Start dancing. That is also one thing which will help you to release stress. So if you're stressed, okay, at sitting at home and wondering and just watching negative news all the time, just put on some good music and start dancing. Okay, अच्छा music लगा के dance करना start कर दीजिए. और you can do basic yoga workout. Okay, you can join watch any of the home quarantine workout which is put on Goki ऐप. वहां पर से देखकर आप कोई भी सिंपल सा वर्कआउट पिकअप करें और वर्कआउट करना स्टार्ट करें. इट इज रियली गोइंग टू बेनिफिट यू. वेट गेन नहीं होगा, एट द सेम टाइम बॉडी आपकी जो है एक्टिव रहेगी. Timana saying after cleaning the screen you're further glowing. Oh my god, thank you so much. Yeah, I thought as much because मुझे थोड़ा सा blurred लग रही थी screen, so that's why I cleaned it. Thank you, Timana. Very sweet of you. And also you're looking like Cinderella today. Thank you so much. Cinderella is so cute. Watching your session while Vajrasan and listening to Mahamrityunjay mantra. Wow. So Jai Singh is a pro at multitasking. He does amazing multitasking. वो बैठे बैठे बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं, which is really really good. Very nice. Gopal Tiwari, shall we walk in the building? I would say no. Don't walk in the building. Avoid stepping out because it's always better to stay at home. Walk building में आप एक उतरोगे तो आपको देख के दूसरे उतरेंगे, and then there's no point in lockdown. So you have to try and be at home. घर पर वर्कआउट कीजिए. अच्छा म्यूजिक लगाइए. होम वर्कआउट के इतने वीडियोस है हमारे
गोकी ऐप पर आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड देन यू कैन विन गोकी कैश. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट. डू कोर वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग, डेली वर्कआउट. यस. सो वेट गेन नहीं करने के लिए जैसे मैंने कहा, भूख लग रही है, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, ये 3 मील के पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए आधे घंटे पहले. जस्ट 30 मिनट्स बिफोर योर ब्रेकफास्ट, before your lunch and before your dinner, have 2 tall glasses of water. Now that will keep your hunger in control. उससे आप ज्यादा खाना नहीं खा लोगे और बॉडी का हाइड्रेशन, बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी, स्किन भी जो है आपकी अच्छी रहेगी. So do that. Have 2 big glasses of water just before you have your meal. One more advice I want to give you is, if you know what sabza seeds are, और अगर आपके घर पे ये सब्जा सीड्स है, बाहर नहीं जाना है लाने के लिए, बट अगर आपके घर पर सब्जा सीड्स है, ओके, जिसे स्वीट बेसिल सीड्स भी कहते हैं, तखमरिया भी कहते हैं, ओके, वो भी आप यूज कर सकते हैं. तो 1 लीटर का जार ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें जो है 3 टेबलस्पून तखमरिया या स्वीट बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स डाल दीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर लीजिए एंड 1 चम्मच हनी डाल दीजिए. बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा. यू विल रियली एंजॉय हैविंग दैट वाटर एंड हैव दिस वाटर थ्रू आउट द डे. पूरे दिन भर में जो है आप ये पानी पीते रहे, इससे आपका पेट भी भरा रहेगा. और सब्जा सीड्स जो है, ओके, दे आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड. जैसे हम जानते हैं फ्लेक्स सीड्स में ओमेगा 3 है, वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वैसे ही सब्जा सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत यूजफुल है. जैसे ही सब्जा हम भिगोते हैं, उसके आसपास एक जेलेटिनियस लेयर फॉर्म होता है, सो लुक्स लाइक जेली. ओके, नाउ दिस इज रिच इन फाइबर. ये आपके शरीर में जाने के साथ साथ ही जो है क्लेंजिंग, साफ सफाई का काम शुरू कर देता है. सो इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग योर बॉडी. बहुत अच्छे से बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होगी. कब्जी अगर है तो कब्जी दूर होगी. फेक हंगर पैंग्स, बार बार भूख लग रही है तो इससे भूख कंट्रोल में रहेगी और पेट भरा रहेगा. वेट लॉस में भी आपको फायदा, वेट लॉस भी हो सकता है इससे. सो ये पानी जरूर से बनाकर पीते रहे, इससे बहुत फायदा होगा. ओ सुमित सिंह, रेनिंग इन पुणे. वाओ माय गॉड, ये सब क्या कहते हैं, बिन मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम बहुत सारी चीजें हो रही है. व्हाट इज हैपनिंग? गॉड हैव वी नीड टू जस्ट कीप प्रेइंग एंड होप फॉर द बेस्ट. Clearing the house, feeling super energized today. That's so awesome. Yeah, you can. So yeah, that's what happens. You know, if you work out in the morning, आप अगर थोड़ा भी वर्कआउट कर लेते हैं, आप अच्छा खाना खाते, बहुत ज्यादा खाना खाओगे ना, याद रखिए इस क्वारंटाइन में अगर आपने ज्यादा खाना खाया तो एनर्जी लेवल आपकी कम हो जाएगी. बिकॉज आपका शरीर जो है पूरा वक्त उसको डाइजेस्ट करने में उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगी. सो खाना बहुत नहीं खाना है, खाना लिमिट में खाना है. बॉडी को एक्टिव रखना है, पानी पीते रहना है. बिलीव मी, आपका एनर्जी लेवल जो है बहुत ही अच्छा होगा. तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए इस क्वारंटाइन में बहुत खाना नहीं खाना है, लिमिटेड खाना खाना है. इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे कि कम से कम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग, मिनिमम 12 to 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग. जैसे आपने शाम को 6 बजे या 8 बजे तक खाना खा लिया तो नेक्स्ट दिन 8 बजे या 10 बजे तक खाना नहीं खाना है. दैट वे योर एनर्जी लेवल्स विल बी गुड. आपके शरीर को इतना समय मिलेगा रिपेयर करने के लिए. ओके, बॉडी में गंदगी है तो गंदगी को बाहर फेंकने के लिए कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है बॉडी में, तो बॉडी का रिपेयर वर्क भी हो जाएगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा. सो बहुत ज्यादा खाने से थकान लगेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा. सो ईट इन मॉडरेशन, स्टे हाइड्रेटेड एंड एज मच एज पॉसिबल स्टे एक्टिव. ओके, जस्ट पुट ऑन सम गुड म्यूजिक. समय नहीं मिल पाता, नो प्रॉब्लम. 10 मिनट के लिए अच्छा म्यूजिक प्ले कीजिए, 10 मिनट के लिए आप अच्छा सा डांस कर लीजिए. फिर थोड़ी देर के बाद आपको समय मिल रहा है 10-15 मिनट के लिए म्यूजिक कर लीजिए. इस प्रकार जो है आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी. And most importantly, don't keep sitting at one place for more than 20 to 30 minutes. Every 30 minutes, get up, take a walk. Whatever work you're doing, please come back in the sink. So don't sit for more than 30 minutes at a place. ये ख्याल रखिए जरूर. How about green tea, black coffee without sugar, herbal life or fresh is okay. Green tea twice a day is fine.
Black coffee without sugar once a day is fine. I would say don't put too much of caffeine in your body because कैफीन जो है मॉडरेशन में ठीक है. बहुत ज्यादा कैफीन से बॉडी वाटर रिटेन करने लगेगी, which is not ideal for your body. So avoid putting too much of caffeine in your body is what I would suggest. Will green tea, black coffee without sugar? Yes, it will make acidic if you have it too much. So 1 cup a day I would say is fine. Don't have too much. Green tea can be 2 cups because green tea is low in caffeine. Coffee is high in caffeine. So coffee can be 1 cup in a day. Green tea can be 2 cups in a day. I'm listening to you and cooking also. I'm multitasker too. Wow, that's awesome. Cooking and listening. This is so cool, Dada. So Dada and Jay are both pro at this. So cool. Ravindranath ji, namaste. Guna is saying raining and windy since morning in Noida too. Oh my god. Okay. This is something. यार पूना में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है. ये हो क्या रहा है? Munmun is saying sabja seeds work same as chia seeds. No, sabja seed is not chia seeds. Chia seeds are different. Sabja seeds are different. They look same but they are different. I am talking purely about sabja seeds. मैं sabja seeds की बात कर रही हूँ. Both have somewhat similar properties. Sabja seeds are more hydrating, I would say. Raining in Jammu too since early morning. My God, आप लोग ने मुझे पूरे भारत की वेदर बता दिया कि नोएडा में भी बारिश हो रही है, पूना में भी हो रही है और अब जम्मू में भी हो रही है, मुंबई में, बाकी में बहुत कड़ी धूप निकली हुई है. थैंक गॉड हम अंदर बैठे हुए हैं. इट्स रियली सनी. Speak little English too since I can't understand Hindi much. Okay, Ramesh Nambiar, I will speak English too. So guys, have sweet basil seeds, very very good for hydrating your body. So have this one flask, okay, about a liter of water throughout the day. And along with that, do not have dinner after 7:38. Try to finish your dinner as early as you can. If you try to finish your dinner by sunset, you will benefit a lot. And also one more important thing is add lemon in your food, okay. So you are having your curry, thoda sa lemon squeeze kar lijiye. If you are having your salad, squeeze some lemon and have your salad. So try to have lemon throughout the day. Also, as soon as you wake up on rising, have a tall glass of water squeezed with 1 lemon juice. Put a pinch of cumin powder, jeera powder, and put a pinch of cinnamon powder in that. Mix it well and have this 2 glasses first thing in the morning and once in the evening. This will also help you to detoxify. This is how you will keep your body in shape and not gain weight. And please do not snack on fried food. Okay, farsan, chevra, fries, packaged food, biscuits, toast, khari, all these things, bakery products, cakes, cupcakes, all these things please avoid. You can snack on kurmura, okay, rice flakes. You can put little turmeric and little salt, make rice flakes in that. You can also have makhanas, okay, makhanas are great. Lotus seeds, okay. You can have fox nuts or lotus seeds. You can have that, and along with that, you can have boiled eggs if you like it. You can have fruits. You can have tomatoes, cucumber, carrots, okay. Snack on all these things and have this drink that I've said, so that whenever you're hungry, you don't reach out for all these unhealthy snacks and you try and have these healthy snacks. So guys, try it and do let me know if it helps. You must make a conscious attempt for Om, actively understanding mindfulness. Absolutely. Mindfulness and Om chanting is also so good. Tanay is saying, I'm doing 16 hours of fasting, started from dated 25th. That's great. You are doing so good to your body. Your body is going to rejuvenate. You'll feel your energy level going up for sure. Tamana is also on 16-hour fasting. Wow, I'm so happy to know so many of you all are fasting. Is Nimbu Pani without sugar okay to have as first intake of the day? Yes, it's good. It's really, really good to have first thing in the morning. Building immunity now, lemon warm water is being practiced. Why? Building immunity, see, lemon in general is very good for your immunity because lemon is rich in vitamin C. So lemon water will help you to cleanse your body, and lemon water will help you to
detoxify. Lemon water will give you vitamin C, which will help you to feel energetic. It will give you good skin. It will give you good hair. It will help in iron absorption. So lemon has some amazing list of benefits. So I would say that lemon is something you should definitely include in your diet every day. Handful of makhana roasted in oven is okay. Avoid using oven. Try to dry roast it on your tawa, on a iron pan, or on a steel में चिपक जाएगा. So use an iron pan. I would suggest that. Don't use microwaves and ovens for roasting. Okay. Yes, Tanay, absolutely motivation matters, and that's so good. You are motivating so many people who's looking at you and getting motivated. So guys, like I said, a snack on healthy things, and please stay away from aerated drinks and alcohol and smoking. Okay, a lot of people sitting at home have bulked up alcohol and are smoking and having alcohol and partying at home. I would suggest that this is the time to detoxify your lungs, your liver. So stop having alcohol, stop having tobacco. Alcohol and tobacco together creates more problem. Alcohol and tobacco, tobacco in combination with alcohol causes more problem, because that goes along with your alcohol, जो dissolve हो जाता है alcohol में tobacco, which is carcinogenic. Carcinogenic is cancer forming. Okay, so tobacco, alcohol से दूर रहिए. And if you do intermittent fasting, if you eat in moderation, if you have fresh fruits and vegetables. I know it's a challenge to get fruits, but believe me, if you see in Mumbai, I'm talking about, okay, in my area, this is what I've seen. You get all the fruits and vegetables before 11. So, try to get whatever you have to before 11 and do not go in a crowded place. And stock up. Yesterday I had a session on how to smartly stock up fruits, vegetables and grocery at home. So do that, stock up things so that you don't have to keep going out. Once a day, have fruits. Once a day, have nuts. And other time try to have a proper breakfast or proper two proper meals. In between you can have light snacks if you're following intermittent fasting. That should definitely increase your energy levels. Ginger, see, nothing is proved, Parag, that can eradicate corona or can prevent corona. But yes, what we can do is we can boost our immunity. How can we boost our immunity? By having regularly having ginger, garlic in your diet, lemon in your diet, jeera, cumin seeds, which will help you to digest food better, legumes, pulses, lemon, vitamin C rich foods, green leafy vegetables, all these things. Of course, hygiene has to be maintained, cleaned properly. Have this will really help you to improve your immunity and will keep you protected. Okay, आपका immunity strong होगा, it will protect you from infections. Okay, now at this time we cannot even afford a simple fever or a cold or a cough, because if you fall sick at this time, there will be chances that your immunity goes down and you can catch infections soon. Also, people around you will get scared. So this is not the time to, you will suffer, people around you will also get scared. So ख्याल रखना है बस. Done preparing food for lunch by listening to you. I'm literally doing fast day cooking after 3 days. It's the 4th day of my cooking. It's literally, wow, that's nice. Fasting in the right way, not starving. Okay, we don't have to starve. We have to fast. Starve nahi karna. Listen to your body's signal. Your body will give you signal when you need to eat, when you need to not eat. So, pay attention, pay heed to that. I meant beside lemon water, why and how is bicarbonate to be had once a day? Okay, lemon water and bicarbonate. Okay, so you put a pinch of bicarbonate in lemon water and you have that in the night. That helps you to, cleanse your system. What diet pattern do you maintain during these days? Okay, my diet pattern is I eat latest by, yesterday I ate at 3 o'clock. I had my lunch at 3 and since then I ate nothing, and I straight away had my breakfast in the morning at 10 o'clock, 10:30. So almost 16, I think more than 18 hours I did, more than 16 hours I did, because I just didn't feel like eating. I had a proper breakfast. Now I'm going to have a proper lunch, and in the evening I'm planning to have like a big bowl of fruits, and with that I'll have nuts. I'm going to either do that or I'm going to have a big tall glass of green smoothie.
And in between, when I feel thirsty, I keep sipping on that sabja water. I have water. Also, I have coconut water. So this is how I eat throughout the day. And in lunch also, I try to eat salad. Tomatoes are there, radish is there, carrot is there. So, I'm high on fruits and salad. And not continuously feeding myself. I don't have a habit of constantly snacking. I just can't do that. Yogic Kriya will immensely help in reducing appetite as well as intake. Automatically body starts consuming selectively. Bilkul, Jay, you are right. If you do yoga regularly, if you practice yoga, if you do Kapalbhati, if you do yoga asanas, you will not keep feeling hungry all the time. And Yogic Kriya like Vaman Dhoti, Shank Pralakshan Kriya, Jal Neti, all these cleansing kriyas will really help you to feel more energetic and detoxify. Yes, copper water is also very good. So yes, using copper bottle is good. But one thing I wanted to bring to your notice is I see a lot of people having copper water throughout the day. No, you can't be having copper water throughout the day because it is toxic. It is a metal. You can't have so much of metal. Metal in excess can cause problem. So just one glass of copper water in the morning is enough. You don't have to keep having that water throughout the day. So keep that thing in mind. Okay, I see very few hearts, guys. 1.5k people watching me live and only 1.6k hearts. Why so? Please keep sending those beautiful hearts and keep motivating me. I'm going to give you all some more tips on how to avoid weight gain in quarantine, guys. Planks, okay, planks does wonders. So I would say that take out time and anyhow try to do 5 minutes of planks every day. Try to do bicycle crunches. Try to do leg raises. Give only 10 minutes, okay, I would say just 10 minutes in which you can do 5 minutes of plank, okay, not back to back. I would say just do 1 minute of plank and then do one Surya Namaskar, then do again 1 minute of plank, then do the other Surya Namaskar, then do 1 minute of plank, then do Surya Namaskar, then do your leg raises, then do your leg circles, then do bicycle crunches. Focus on your core, okay, if your core is strong, your digestive system will be good. Your digestive system is good, your immunity will be good. So core indirectly helps you to boost your immunity. So people who have strong core will always have good immunity. So focus on that, guys. Copper water only twice in a day. I would suggest, Jay, not more than once. 1 cup in a day, that's it. You can't be having so much of metal throughout the day. You'll feel tired. Okay, your liver has to work extra hard to get rid of that metal. So you will feel tired and it's actually not good for your body. So I would suggest don't have more than 1 cup or 1 glass in a day. No need to have that entire bottle. In that bottle, your family, if you have that 1 liter bottle, 4 people, 250 ml is all you need, not more than that. Copper water takes 8 hours to charge. Yes, you keep it overnight, it takes that much time to charge. How much time should water be stored before having it in copper vessels? So Jay Singh just answered it. Overnight is best. Okay, you store it overnight. Overnight store करने से उसका सारा गुण जो है उसमें आ जाएगा. कभी कभी ख्याल आता है बस आपका ही सहारा है हमें अब तो, नहीं तो 1940s के एल सेंगल साहब जी के गाने ही सुनने पड़ते. जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करे, जब दिल ही टूट गया एक भेदी लूट गया कोरोना लॉकडाउन, आते रहिए ऑनलाइन मोहतरमा हम थोड़ा तो जी पाएंगे. वाह वाह क्या बात है यार अमित यार. आप ये क्वारंटाइन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो गए? आप क्या क्या लाइक आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट सच अमेजिंग लाइन्स और आप बहुत ही अच्छे राइटर हो गए. तो गाइज you should tap on these creative ideas and start writing Jay, Amit, Dada, Zulfi, you all should start writing nice rhymes and शायरी बनाइए, एक अच्छे राइटर बन जाएंगे. क्वारंटाइन खत्म होते होते बहुत सारे लोगों की क्रिएटिविटी बाहर आएगी. सो क्या बात है. वेरी गुड अमित, वेरी नाइस. ओके सो मैं तो आते रहूंगी, आप भी गाना सुनते रहे और आप भी जो है अपने आप को मोटिवेट करते रहे, घर का काम करे, बांटे, शेयर हाउस होल्ड वर्क. द बेस्ट वर्कआउट आई वुड से टू नॉट गेन वेट इन क्वारंटाइन इज टू डू योर झाड़ू एंड कटका.
ये झाड़ू मारिए पूरे घर में और कटका कीजिए. दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बेली फैट. एंड यू नो, वो आपने झाड़ू कटका कर दिया, आपको पूरे घर का अच्छे से झाड़ू कटका करने के लिए 15 मिनट, छोटा घर है तो बड़ा घर है तो आधा घंटा कम से कम लगेगा. तो ये कर लीजिए. इससे भी जो है स्वेटिंग अच्छी हो जाएगी और पेट भी साफ हो जाएगा, गैस भी नहीं बनेगा. आपकी जो मेड है, ओके, आपकी जो हाउस हेल्प है, आपका हाउस स्टाफ है, वो हेल्दी होकर आएगा और आप सब जो है अच्छे खासे फिट और स्लिम हो जाएंगे. सो यस, डू योर हाउस होल्ड वर्क and do not overeat is one thing I want to suggest, and snack on healthy things. Please do not keep watching Netflix, and please don't keep watching TV for too late. Sleep early, wake up early, start your day early, make productive use of the day, and you know, please start some workout in the morning and get into it. Try that Goki challenge. Points भी मिलेगा, आपका workout भी होगा. What is the right time of meditation? I would say morning, or just before you go to sleep when it's silent, or you know, wake up in the morning. Between 4 to 5 is the best time to do your meditation. Okay, so you can sleep early, wake up for some time, wake up for 10-15 minutes. I would say start with 1 minute. Okay, just close your eyes, observe your breath, do deep breathing. Start with 1 minute of meditation, and then you know, you can increase that. So 1 minute is also good. If you feel that 1 minute is also getting too much, you can put on some good mantras, positive mantras. ओम चांटिंग लगा लीजिए, कोई अच्छे चांट्स लगा लीजिए, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आप फोकस भी जो है कर पाओगे. सो डू दैट. इंशाअल्लाह कि आप पर सदा इनायत बने रहे. आमीन. इनायत बने रहे. अमित, मेरी उर्दू अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं ये वर्ड इनायत बने रहे, वो क्या हुआ? अमित, आई थिंक I'll continue thinking after this session ends. So guys, thank you so much for coming in and watching my session. I hope you all stay fit and in shape and not gain weight. So I'm just going to quickly briefly explain what all you have to do is after every meal, okay, 10 minutes of walk, okay, but don't start walking as soon as you finish your meal. Sit in Vajrasan, sit for some time so that your food gets digested. You can do your vegetable chopping work, or you can do the other work at home where you're sitting at least for 15-20 minutes and then you walk. So खाने के lunch, breakfast के 10 मिनट, breakfast के बाद 10 मिनट वॉक करें, lunch और dinner 30 मिनट ऐसे कर लीजिए. कोर पे फोकस कीजिए, कोर से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. तो प्लैंक्स कीजिए, लेग रेसेस कीजिए, 3 लीटर पानी पीजिए. तीनों टाइम खाने के पहले 2-2 ग्लास पानी पीजिए और विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाइए. नींबू निचोड़ कर लीजिए सुबह सुबह जो है. गरम पानी में नींबू, दालचीनी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर खाइए. उससे भी जो है आपकी गैस कम बनेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. जल्दी सो जाइए, नींद अच्छे से ले. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें. डीप ब्रीदिंग से आपके शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी. इस सत्तू गुड. आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट सत्तू. सत्तू इज गुड. यस, सत्तू इज गुड फॉर योर हेल्थ. इट्स रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन, अमेजिंग. इनायत कृपा. Okay, got it. Thank you, Amit. Thank you so much everyone for tuning in. You all have a wonderful day. Please make productive use of your day. I hope to see you all tomorrow at 2 o'clock. Keep smiling. Take a very good care of yourself and be the force. I love you all. Namaste. Bye.